on the FLOTUS or someone else? Someone else. There's another guy on the other. How about you? I'm on the FLOTUS, yeah. Do you have to hop down off this thing pretty quickly? Yes. Yeah. Yeah. You're with us today? Well, just for this event. Oh, are you going? You're not going to school? Yes, we're going to school. That's what I mean. Yeah. Okay, good. Yeah. Okay, good. Which network are you with? Fox. Oh, yeah. Football. Yeah. That's good. Yeah. You let us know who can help. Thank you. Seriously. I'm hoping I don't have to take my backpack into the school. This thing is like I'm small. leaving everything but my camera. Small truck. And lighting, obviously. Yeah. Where do you leave your stuff? I'm going to leave it in the van. If I didn't have to carry this over here, I actually would prefer to have left it on the other riser, but I wasn't sure I'd get to go back over there. Oh, yeah, wait. So when I get out, I'm going to bump it up. When we first showed up, they weren't even letting us over again. It's been mad at us. Then we had to fight them. That was yesterday. Perfect. I am so glad about this. Because they were telling me that missing guys like He didn't go to August. Not in August. Only will be Chief Minister. Mr. Colby. अरे माइक Excuse me. Mike. Excuse me. माइक पीछे करिए सर। Hello. Excuse me. यहाँ माइक नहीं मिलेगी। Excuse me. The cavalcade coming to the forecourt. The forecourt, as the dignitary is being escorted to his position inside the forecourt. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, in his car as he moves to alight at the forecourt and meet the other members of the cabinet as well as the External Affairs Ministry, ambassadors and other dignitaries who are present here. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हुआ, जिनकी अगवानी माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई। अधिकारी, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, तीनों ही सेनाओं के प्रमुख, सभी को इंतजार है देश के मेहमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सैन्य टुकड़ियां मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा। अश्वारोही दल जो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी के लिए इस वक्त राष्ट्रपति भवन के द्वार पर तैनात हैं। और यकीनन अमेरिका विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति। इन दोनों देशों के बीच में मित्रता, आर्थिक दृष्टिकोण हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वक्त सभी को इंतजार माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, माननीय राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य भी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में मौजूद हैं। माननीय राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी और दामाद, साथ ही उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति भवन में मौजूद होंगी, जहां पर परंपरागत तरीके से, जो कई वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं उन्हें समारोहपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
और अब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में श्रीमती कोविंद का आगमन हुआ है। As Mayank mentioned to you, the US President will be received at the gates of Rashtrapati Bhavan by a cavalcade of the President's bodyguard. And on the screens now you can see the President of India, Mr. Ramnath Kovind, and his wife, the First Lady, Mrs. Kovind, being received by the Honorable Prime Minister. And as he walks down and acknowledges the greetings of the members of the delegation from India here. So an air of ceremony, of pomp and grandeur. We've also got the Tri-Services Guard of Honor, which has 6 officers and 150 other ranks, led by Lieutenant Colonel Ashish Thakur, who is the parade commander. The Army unit is led by Army Captain Abhay Shiraz Sandhu, the Air Force unit by Squadron Leader DKS Chauhan, and the Naval unit by Lieutenant Commander AK Mohanty. साथ ही सैन्य टुकड़ियों के साथ मिलिट्री बैंड, जो कि दोनों ही राष्ट्रों के राष्ट्रगान की धुन गार्ड ऑफ ऑनर के समय बजाएगा। Ivanka Trump and Jared Kushner center in the lineup of the people who will be introduced to Mr. Trump as he walks down. All eyes now awaiting the arrival of Mr. Donald Trump and Melania Trump, as they will be accorded the official reception by the President of India. अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत कल माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पहुंचे थे। गुजरात के अहमदाबाद में लैंड करने के साथ ही मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में लाखों लोग साक्षी बने माननीय राष्ट्रपति ट्रंप और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हमेशा से कहना रहा है कि अमेरिका लव्स इंडिया एंड अमेरिका रेस्पेक्ट्स इंडिया। इसी प्रेम और इसी सौहार्द, इसी आदर के भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हो चुका है और इस वक्त 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। साथ अश्वारोही दल इस वक्त अगवानी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति ट्रंप की। Rashtrapati Bhavan has always hosted defense investiture ceremonies, swearing in its leaders, honored its brave hearts and achievers, and heard speeches of world leaders, signed pacts and treaties with various countries, and celebrated India's independence and Republic Day functions along with other festivals in this very arena. The beast as the vehicle of the President of the United States of America is called, making its way to the alighting point, escorted by the President's bodyguard, an elite force and senior-most unit of the Indian Army.
अंतरसेना सम्मान गार्ड राष्ट्रीय सलूट समाप्त शस्त्र अंतरसेना सम्मान गार्ड बाजू शस्त्र श्रीमान अंतरसेना सम्मान गार्ड आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है led by Lieutenant Colonel Ashish Thakur of the 5th Battalion of the 1st Gorkha Rifles, taking the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, for his inspection. We have 6 officers and 150 other ranks in this Guard of Honor that draws its men from the 3 services. The Army, led by Captain Abhay Sheraz Sandhu, the Navy, led by Lieutenant Commander A.K. Mohanty, and the Air Force, led by Squadron Leader D.K.S. Chauhan. Mr. Trump is the 7th US President to visit India and has had a really busy schedule since yesterday when he landed in Ahmedabad, moved to Agra in the evening, and now in Delhi, which is a day-long program that is really packed to the hilt.
After the inspection of the Guard of Honor, Mr. Trump and Mr. Kovind shaking hands, as he will now introduce Mr. Trump to the Indian delegates who are assembled here. And we begin with the military secretary, actually with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, Mr. Rajnath Singh, the Defence Minister, Mr. Jaishankar, the Foreign Minister, Mr. Harshvardhan, the Minister for Health and Family Welfare, General V.K. Singh, former Army Chief and now Member of Parliament in the Lok Sabha, the Lieutenant Governor of Delhi, Mr. Anil Baijal, Mr. Rajiv Gauba, the Cabinet Secretary, Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadoria, President Trump shaking hands with General M.M. Naravane, Army Chief, Secretary to the President Sanjay Kothari, also Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary, Dr. Bala Prasad, Special Secretary to President, Randhir Kumar Jaiswal, Joint Secretary, Rudra Gaurav Shresht, OSD, Prime Minister Office, shaking hands with Joint Secretary Ajay Bahadur, Press Secretary Ajay Kumar Singh. And the Dean of the Diplomatic Corps, Ambassador of the Dominican Republic, Hans Dannenberg Castellanos. Now President Trump introducing the US delegation to our President. You've got the US Ambassador in India, the US Secretary of Commerce, the Secretary of Energy, the National Security Advisor, Senior Advisor Ivana Trump, and her husband, who's also a Senior Advisor, Jared Kushner, the White House Principal Deputy Chief of Staff, Emma Doyle, Stephen Miller, the Advisor to the President, the White House Director of Social Media and Assistant to the President, Dan Scavino, Lindsay Renault, the Chief of Staff to the First Lady, Rob Blair, and Stephanie Grisham, the White House Press Secretary. President Kovind and Mrs. Kovind with Mr. Trump and Melania Trump as they move back to their positions. And as I mentioned to you earlier, he has a packed day after the reception, this official reception at Rashtrapati Bhavan. Mr. Trump will move to Rajghat, where he will pay his respects to Mahatma Gandhi. और कल भी जैसे कि साबरमती आश्रम में हमने देखा माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी जी की महानता को सराहा. And now President Donald Trump along with President of India Shri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Shri Narendra Modi for a group photograph which is going to be a memory indeed. Smiling faces on the second day of his visit to India. President Kovind and President Trump exchanging a few words as this moment is captured for posterity. He has a lot of official meetings today, delegation level talks, an exchange of agreements perhaps. And then there is a lunch hosted by the Prime Minister, after which he will have meetings with the Vice President and the External Affairs Minister, and he will also visit the US Embassy in India. In the evening there is a dinner hosted by the Indian President at Rashtrapati Bhavan, which will be an official banquet in honor of the visiting President of the United States of America. And of course he leaves later in the night
back to the United States. A really quick trip for the Trumps. We hope that they have enjoyed their sojourn, their maiden trip to India. The Cadillac making its way out now from the forecourt after the official reception hosted by the President of India to the visiting President of the United States of America. From the forecourt of imposing Rashtrapati Bhavan, beautiful scenes of President Donald Trump and President of India and Prime Minister bidding adieu. Mayank, Doordarshan has really been covering all the events related with his visit beautifully with its magnificent camera coverage. As we see the Prime Minister bidding goodbye to the President and Mrs. Kovind. The ceremony really coming to a close, but it's actually a beginning of an entire day of events that the Trumps and the Indian administration will
मैं आपके लिए इतना रहता हूँ जैसे वो निकाल दिए ना बस फोटो जरूर ले लीजिएगा। तो आप सामने आया ना वो ब्लू कलर अब नहीं आया फोटो कैसे लगाओ जरा पैकेट ऑन कर दे। कोई उतरने वाला नहीं हमको लेके जाएंगे। अरे दादा आप वो कर रहे हो ना पूरा हिल रहा है नहीं नहीं तो जब वो आएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। बस 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 अभी तो हिलने दो यार। ये आपका प्रोजेक्ट गोपाल का इनको पेन करो। नहीं वो जो उन्होंने चढ़ा रखा है ना उसके बारे में हाँ तो क्या कभी हम इधर पीछे हम दो लोग ऑलरेडी खड़े हैं हमारे साइड से खड़े नहीं यहाँ पर किसी भी नोट नहीं होंगे नहीं पीछे नहीं होंगे लोग तो हम लेंगे वो तो खैर मान जाएंगे हमें बोला गया कि वापस हमारा मूवमेंट हो गया निकल चुके वहां से वो सब उन्हीं के लिए दे रहा है थोड़ा सा बस नीचे कर लेगा जब साथ साथ चलते रहेंगे दोनों हल्का सा बस सपोर्ट कर लो। मोहब्बत में चाहिए तो हो रहा है काम नहीं मोहब्बत में चल रहे हैं अभी तक नफरत पाली नहीं हमने किसी से। ऐसा लग रहा है इंडिया में इनकी वजह से रह रहा है सारा आके हर चीज में हुकूमत से चला के चले जाओ। एक्चुअली क्या कि एक सुपर पावर है ना ये सुपर पावर तो है कह रहा हूँ यहीं पकड़ के बंद कर दो किसी कमरे में पावर यही रहेगी अपने पास। नहीं अब रीड करने से पूरा नहीं हैंग हो जाएगा। अब वो ओके तो बगल में जो है ना चारों तरफ से उसमें राइट लेफ्ट पहले बचपन में स्कूल पढ़ते थे ना तो अमेरिका में सुनते थे आज मैं जितना अमेरिका वाला आज सामने खड़ा हो रहा है समझो कितनी बड़ी बात है। चौथे नंबर पे जाना वो है दिखा दिया भाई क्लास में सेकेंड लाइन में चौथा नंबर। पिक्चर में इंडियन तो अपने आप रीड कर लेगा।
अगर मान लेते हैं या तो पूरी करेगा ना नहीं आएंगे नहीं आएंगे ये पीछे हो जाता है चलो बाय। मीडिया कम आपकी और कम है मीडिया नहीं, ये सारे बड़े बड़े चैनल सभी आ गए। बाकी इनको पता है ना ये नहीं दूरदर्शन, दो लोगों की उम्मीद लगा बैठे हैं सब लोग। सबसे ज्यादा मीडिया हैदराबाद हाउस में बहुत खाली एग्रीमेंट करेंगे। अरबों खरबों का लेन देना कल आज इनको भाई पिक्चर पे नहीं लाना, ठीक है? इन दोनों को ये सिक्योरिटी के लोग हैं ना, जैसे हम लोग सिक्योरिटी, ठीक है? हम किसी भी शॉट में ठीक है ठीक वही हम देखें। इसी को लेना तो देखिए भीड़ से थोड़ा कितने ग्रीन हो रखे हमारे कोई पिक्चर नहीं। आप लोगों को नहीं आ रहा है? अरे सर ये चैनल हमारे यहाँ के पुलिस वाले का आ जाएंगे हम। ये वाला सर ये इसी से अराइवल रहेगा। अच्छा मैं आगे पास तुम लैंडलाइन से कॉल करो, तुम लैंडलाइन से कॉल करो, तुम्हारी कॉल मिल जाएगी। चले जाओ हम लोग किसी को खुश करने के लिए पहले पेड़ आएंगे वो इस साल से ये विजिट करें। सर पहले टी पॉइंट करेंगे पहले वो नहीं पहले यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट यहाँ पे आएंगे, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड विजिटर बुक सेलिंग और लास्ट है वो फ्री। लास्ट है मगर वो ये अलाउ नहीं कर वहाँ अलाउ नहीं आएगी टीम पूरी नहीं आपकी भी नहीं गई आपकी गई हमारी नहीं गई मना कर दी अलाउ नहीं मना कर दी अलाउ नहीं यहाँ से पहला अराइवल दूसरा अराइवल ठीक है अंदर। हाँ हाँ वो दिल्ली से फिक्स रखेंगे तो लॉन्ग में कल नहीं जो आए हैं हाँ सर ये सामने है यहाँ। हाँ ये थोड़ा बस यही से ले लो। सर बैठे छुट्टी होंगे वो जब आ जाएंगे ना बहुत ज़्यादा उसमें यार मैं तो नहीं आऊँगा, दीपक भी नहीं आएगा, पता है दीपक को फोन आता है, अभी तो हैदराबाद से जाना है इसके बाद। रात के एयरपोर्ट बहुत आपका तो खत्म हो जाएगा ना काम। हाँ बस एयरपोर्ट दूर लगा रखा है एयरपोर्ट दीपक को दे रखा है ना मेरा घर बहुत दूर पड़ जाता है, स्टील देंगे मेरा
हमारे उधर तो ऐसे ही लाग और लगा कितना वो कर पाए लोकल फिर भी तो हमारे मेरे घर से 2 किलोमीटर यही तो शाइन बाबा वाला रोल है क्या? सेम डे जाना होता है। क्योंकि पता है वही मिलेगा। एक वो और एक वो कितना बोले? आ जाएगा अगर आ गया मॉर्निंग का था ना वो आ गया वो तो अपना भी वो जो न्यूजीलैंड के ना डिप्टी